So yeah, let's begin the next chapter, that is chapter 4, that is pitching the idea and presentation. कि आइडिया को पिच करना कैसा है या फिर कौन कौन से पिच टाइप्स है, तो वो सब पढ़ेंगे. So what are the learning outcomes, what are the why? So first understand the significance of business plans and pitch decks for startups and effectively communicating the business idea to the public. कि business plan क्या होता है, pitch deck क्या होती है, वो चीज आ गई. फिर the master the art of elevator pitch by crafting concise impactful scripts that instill the confidence in investors and customers. तो elevator pitch बनानी पड़ेगी. फिर आ जाता है familiarize with the essential rules and steps for effectively pitching ideas टू द इन्वेस्टर्स एंड द कस्टमर्स. तो ये एक चीज आ जाती है. लास्ट में आ जाता है लर्निंग टेक्निक्स फॉर लेवरेजिंग द आर्ट ऑफ परसुएशन इन एवरीडे इंटरेक्शन टू कल्टिवेट द एंड्यूरिंग बिजनेस रिलेशनशिप्स. तो दिस आर द लर्निंग आउटकम्स फॉर द एंटायर थिंग. फिर आ जाता है तो ये पूरा उसका ही माइंड मैप है कि क्या क्या चीज़ है. तो पहला तो बिजनेस प्लान एग्जांपल्स, पिच डेक का फॉर्मेट है, फिर पिच डेक के एसेंशियल्स क्या है, यूसेज ऑफ फंड्स क्या होगा, पिच डेक का सिंपल एलिवेटर पिच अगर बात करें तो एसेंशियल्स ऑफ एलिवेटर पिच क्या होती है, आर्ट ऑफ एलिवेटर पिच क्या होती है, अगर आइडिया को पिच कर रहे हैं इन्वेस्टर को कैसे करेंगे, कस्टमर्स को कैसे करेंगे, आर्ट ऑफ परसुएशन क्या है स्टार्टअप्स का, और सोशल इम्पैक्ट. तो ये पूरी चीज़ आ गई पिचिंग आइडिया एंड प्रेजेंटेशन. So in the recent years, startups have become more well-structured due to a lot of factors. The widespread availability of information and resources via the internet has empowered aspiring entrepreneurs with the knowledge and tools needed to create structured business plans and strategies. The development of robust startup ecosystems comprising incubators, accelerators, and funding networks has provided entrepreneurs with the necessary support and the mentorship to build the structured business. The adoption of lean startups methodology has emphasized rapid experimentation and customer feedback, leading to more structured एंड वैलिडेटेड बिजनेस आइडियाज के भाई जो लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी है उससे ये सब चीजें फटाफट शुरू करना शुरू हो गई थे. लास्ट में भी अपने देखा. एडिशनली द इंक्रीजिंग फोकस ऑन स्केलेबिलिटी एंड ग्लोबल रीच has compelled startups to adopt a more structured approach to planning and execution. So further, the heightened investor scrutiny has raised the bar for startups, requiring them to have well-defined strategies and clear paths to growth to secure funding. Together, these factors have contributed to the trend of startups being more well-structured in recent years compared to the past decade. Not just experienced professionals and visionaries, but young entrepreneurs are preparing themselves to enter the startup space through a variety of means, leveraging both traditional education and the modern resources. कि भाई सबको ही स्टार्टअप तो करना ही है आज के जमाने में. So many pursue relevant academic paths such as degrees in business, entrepreneurship और technology, equipping themselves with the foundational knowledge and skills. तो यही अपना जो ज्ञान ले रहा है वही वहाँ पे भी सिखाता है. Additionally, they often seek out specialized courses, workshops, and boot camps focused on the entrepreneurship, innovation, and business management, both online and offline. Now, young entrepreneurs are also actively engaged in networking events. कि networking events में तो जाना ही पड़ेगा. Industry conferences and mentorship programs to build connections, gain insights, and learn from the experienced professionals. They also leverage a digital platforms such as social media and online communities to connect with like-minded individuals, share ideas, and access the valuable resources. Hands-on experiences through internships, part-time jobs, or involvement in student-run ventures further prepares them for the challenges of the entrepreneurship. And to materialize all of these learnings and experience into one business idea, having a business plan is extremely important. तो यही आ गया कि भाई ये सब चीजें करने के लिए एक बिजनेस प्लान होना बहुत जरूरी हो जाता है. It helps entrepreneurs stay on track and make smart decisions. It also helps them convince investors to or banks to support their business, and it helps them think about and prepare for any problems that might come up along the way. तो ये चीजें पूरी हो जाती है. Now, बिजनेस प्लान एंड पिच डेक में क्या-क्या चीज़ें आती है. सो बिजनेस प्लान इज़ लाइक अ मैप फॉर द एंटरप्रेन्योर्स. इट्स लाइक अ मैप कि भाई कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, तो वो मैप से ही ऐसे जा सकते हैं. सो बिजनेस प्लान इज़ दैट. सो इट शोज़ देम वेयर दे वांट टू गो विद द बिजनेस एंड हाउ दे आर गोइंग टू गेट देयर. कहाँ जाना है एंड कैसे जाएँगे. कहाँ जाना है एंड कैसे जाएँगे. तो ये 2 ही क्वेश्चन होता है. कहाँ जाना है एंड कैसे जाएँगे. वेयर एंड हाउ. It's more important. So it includes things like what the business aims to achieve, who their customers are, how much money they expect to make, and what they will need to make it happen. तो यही सब चीज़ें जो रिक्वायर्ड होती है कि ये चीज़ है, तो वही सब रिक्वायरमेंट आ जाती है. स्पेशली इन द बस्टलिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑफ इंडिया, द सिग्निफिकेंस ऑफ अ रोबस्ट बिजनेस प्लान कैनॉट बी ओवरस्टेटेड एज एंटरप्रेन्योर्स नेविगेट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ अ रैपिडली इवॉल्विंग मार्केट. फिर अदर टेक द एग्जांपल ऑफ फ्लिपकार्ट, द ई-कॉमर्स जायंट दैट reshaped India's retail landscape. In its infancy, Flipkart's business plan articulated a vision to revolutionize online shopping in the country, leveraging the technology and logistics to offer a seamless shopping experience. तो पहले तो फ्लिपकार्ट का वही था कि भाई उनको पूरा ऑनलाइन शॉपिंग का जो एक्सपीरियंस है वही पूरा का पूरा रिवॉल्यूशनलाइज कर देना है. सो दिस फोरसाइट आउटलाइन इन इट्स प्लान्स आउटलाइंड एंड इट्स outlined in its plan laid groundwork for the Flipkart's meteoric rise and eventual acquisition by Walmart, illustrating the power of a well thought out strategy. कि फ्लिपकार्ट को फिर वॉलमार्ट ने अक्वायर कर दिया बिकॉज उनका स्ट्रेटेजी ही यही था ऑनलाइन शॉपिंग को बहुत बड़ा बनाना है. Similarly, Ola, India's homegrown ride-hailing unicorn, charted its course with a meticulously crafted business plan that tapped into burge ongoing burge owning demand for convenient transportation solutions.
With a keen focus on market analysis, operational efficiency, and customer centricity, Ola swiftly emerged as a dominant player in India's mobility sector, challenging the traditional modes of transportation. तो ये एक बहुत बड़ा डोमिनेंट प्लेयर खड़ा हो गया ओला, पूरे जो ट्रेडिशनल फील्ड थी उसको पूरा का पूरा चैलेंज करके उसमें रख दिया. So once the entrepreneurs has clarity of the business plan, next what is needed is showcasing the idea and plan to the potential investors, partners, and the stakeholders. A pitch deck is a succinct and visually engaging presentation that entrepreneurs use to pitch their business ideas to the potential investors or the stakeholders. Think of it as a strategic tool crafted with the aim of persuading investors to buy into the business concept and provide the financial support. तो यही है पिच डेक वही है कि भाई बताने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, तो वो पिच डेक है. So much like business traditional business presentation, a pitch deck typically consists of a series of slides that cover essential aspects of the business, such as the problem being solved, the solution offered, the target market, the competitive landscape, the business model, financial projections, and the team behind the entire venture. So, however, what distinguishes a pitch deck is its brevity and focus on storytelling. कि भाई छोटा होना चाहिए, brevity मतलब छोटा या फिर concise होना चाहिए, and storytelling के साथ होनी चाहिए. So each slide is carefully curated to convey a specific message or a key content or a key point concisely. Visual elements like images, charts, and graphs are strategically incorporated to enhance the understanding and the engagement. The goal of a pitch deck is not only to inform but also inspire the users. So entrepreneurs aim to capture the attention of investors, evoke the excitement about the business opportunity, and ultimately convince them to invest their capital. And thus, crafting an effective pitch deck requires a combination of strategic thinking, persuasive communication skills, and a deep understanding of both the business and the target audience. तो ये सब पूरी चीजें सबको पता मतलब फाउंडर्स को पता होनी चाहिए फॉर अस एज प्रोफेशनल्स. तो ये एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का जो रुझान है या फिर उस चीज का सब चीजें उसमें डालनी होती है, तो वो सब पता होनी चाहिए ताकि पिच डेक अच्छी बन सके. सो one of the earliest examples of a pitch deck can be found in the story of Fairchild Semiconductor, a pioneering semiconductor company founded in 1957. Fairchild's co-founder, Sherman Fairchild, created a set of slides to showcase the company's technology and market potential to the potential investors. These slides, which included technical diagrams and financial projections, laid the groundwork for what would later become known as a pitch deck. कि भाई उसने बताया कि भाई हाँ ये ऐसा होना चाहिए, तो वो pitch deck बन गया. Through the later half of the 20th century, as the technology industry continued to grow and evolve, the use of pitch decks became increasingly prevalent among the entrepreneurs seeking the venture capital funding. However, it wasn't until the dot-com boom of the late 1990s and early 2000s that pitch decks truly become a standard tool in the startup ecosystem. के late 1990s और 2000s के बाद ही pitch deck became a very good standard form के ऐसे ही present करनी ही चाहिए. So, during this time, the rapid proliferation of internet-based startups led to a surge in venture capital investment, with investors eager to capitalize on the potential of emerging technologies. Pitch decks become a vital tool for entrepreneurs to attract funding in this competitive environment, with companies like Google and Amazon using them to secure early stage investment. In the years that followed, as the startup ecosystem expanded beyond Silicon Valley to the cities around the world, the use of pitch deck became even more widespread. Today, pitch decks are a ubiquitous part of the startup culture, used by entrepreneurs in industries ranging from the technology to healthcare to finance to pitch their business ideas to the investors, accelerators, and the potential partners. So, pitch deck is a very standard form of things कि वो तो चाहिए ही होते हैं. कहीं पे भी पिच करने जाओगे तो pitch deck तो चाहिए होगी ना, उसके बिना तो क्या ही पिच करोगे. So that's the thing of this. So the evolution of the pitch deck reflects the changing dynamics of the entrepreneurship and venture capital over the past century, serving as a testament to the enduring importance of the clear communication and the compelling storytelling in the pursuit of funding and the growth. Now, let's start with drafting a business plan. तो business plan को कैसे draft करेंगे? So business plan serves as a blueprint for a company's vision, guiding its operation strategy and the growth trajectory. The components of a business plan generally include the following, while the entrepreneur is free to add more elements based on the audience it is being presented to. तो ये पॉइंट्स आता है. तो क्या क्या होता है बिजनेस प्लान में? एग्जीक्यूटिव समरी आती है, कंपनी का डिस्क्रिप्शन क्या है, मार्केट का एनालिसिस, प्रोडक्ट्स और सर्विस, मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजी क्या है, ऑपरेशनल प्लान क्या है, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइनेंशियल प्लान. तो अपन ने आगे पढ़ा था बिजनेस मॉडल कैनवास, अगर आपको याद हो तो वी स्टडीड बिजनेस मॉडल कैनवास, तो उसमें भी ऐसी ही सब चीजें थी. तो बिजनेस प्लान में भी उसी से कुछ उठा उठा के चीजें बनानी होती है. सो let's get executive summary kya hai. So the executive summary provides a snapshot of the entire business plan, summarizing the key aspects such as the business concept, market opportunity, competitive advantage, financial projections, and the funding requirements. For example, Airbnb's executive summary highlights that it's a disruptive approach to the hospitality industry by connecting travelers with the unique accommodations offered by the host worldwide. तो Airbnb का वही था executive summary कि भाई क्या होना चाहिए, we are very going disruptive. तो ये हो गया अपना executive summary. फिर आ जाता है company का description. This section outlines the company's mission, vision, values, and core competencies. So, you have studied this in CA
इंटर का जो एसएम होता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो उसमें भी यू वुड हैव स्टडीड दिस मिशन विजन वैल्यूज एंड कोर कॉम्पिटेंसेस। सो आई एम थिंकिंग कि मैं एसएम का भी आई डू सच टाइप ऑफ वीडियोस। देखते हैं अगर फ्यूचर में आई गेट ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ टाइम, तो मैं एसएम का भी ऐसी एक सीरीज लाने का सोच रहा हूँ, विच इज वेरी हेल्पफुल टू एवरी स्टूडेंट के। एसएम थोड़ा प्रैक्टिकली पढ़ते हैं, एंड एसएम जो मैं भी जो न्यूज़ पढ़ता रहता हूँ, या फिर तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो एग्जांपल्स मैंने बुक से पढ़े, या फिर इतनी सारी बुक्स किताबें पढ़ी है, तो उससे एसएम इज अ सब्जेक्ट वेयर आई कैन हेल्प सीए स्टूडेंट्स एंड सीए स्टूडेंट्स एज वेल। तो मैं देखता हूँ कि अगर टाइम मिला तो मैं फिर इसके बाद एसएम का भी शुरू करूंगा, एंड ये सब उसमें फिर पूरा डेप्थ में डिस्कस करेंगे कि ये सब चीज़ें क्या होती है। सो टेक एथर्स बिजनेस प्लान एज एन एग्जांपल, emphasizing its mission to accelerate the world's transition to the sustainable energy through the production of electric vehicles and the renewable energy products। तो एथर का भी वही है कि एथर ने बनाया तो है अच्छा प्रोडक्ट, बट वही है कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये स्टार्टअप्स में दिक्कत वही आ जाती है कि जब 5 इयर्स का डेडलाइन हिट होता है ना, उसके बाद ग्रोथ कितनी है कितनी नहीं है, सो वो सब क्वेश्चंस आ जाता है। फिर आ जाता है मार्केट एनालिसिस। कंडक्टिंग थरो मार्केट रिसर्च इज क्रूशियल टू अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्री लैंडस्केप, टारगेट मार्केट डेमोग्राफिक्स, मार्केट ट्रेंड्स एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। Ola's business plan, for instance, analyze the transportation industry, identify the inefficiencies in traditional taxi services, and recognize the potential of a technology-driven ride-hailing platform to disrupt the market। तो ये पूरा मार्केट एनालिसिस आ गया। फिर आ जाता है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में क्या है, तो द सेक्शन डिस्क्राइब्स द कंपनीज ऑफरिंग्स इंक्लूडिंग फीचर्स, बेनिफिट्स, प्राइसिंग स्ट्रेटजी एंड कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग। क्या अपनी प्रोडक्ट्स में क्या-क्या फीचर्स है, अपने प्रोडक्ट के क्या-क्या बेनिफिट्स है, तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाती है। सो अमेज़न्स बिज़नेस प्लान showcases its expansive product range, competitive pricing, customer-centric services such as Prime membership with a fast shipping and exclusive benefits। तो ये पूरा प्रोडक्ट और सर्विसेज में चीज़ें आ जाती है। फिर आ जाती है मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजी। सो आउटलाइनिंग द स्ट्रेटजीज फॉर एक्वायरिंग एंड रिटेनिंग कस्टमर्स इज एसेंशियल फॉर द बिज़नेस सक्सेस। क्रेड्स मार्केटिंग प्लान, तो क्रेड का जो मार्केटिंग प्लान होता है ना, वो बहुत मज़ा आती है। राहुल द्रविड़ वाली ऐड अगर देखी हो, या फिर कुछ भी कपिल कपिल देव वाली भी ऐड अगर आपने देखी हो, तो मजा आती है। थ्रेड का मार्केटिंग प्लान 2-3 साल पहले तो बहुत ही अच्छा था। फॉर एग्जांपल, फोकस ऑन डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स, यूजर जनरेटेड कंटेंट एंड रेफरल प्रोग्राम्स टू ड्राइव यूजर एक्विजिशन एंड एंगेजमेंट। फिर आ जाता है ऑपरेशनल प्लान। तो डिटेलिंग द डे टू डे ऑपरेशंस, प्रोडक्शन प्रोसेसेस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड रिसोर्स एलोकेशन एंश्योर्स स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। तो मैकडॉनल्ड्स का अगर ऑपरेशनल प्लान देखो, तो कोई भी एफएमसीजी ब्रांड होती है ना, उसका ऑपरेशनल प्लान एफएमसीजी का फूड एंड बेवरेज, सॉरी एफएमसीजी बोल रहा हूँ, तो फूड एंड बेवरेजेस की जितनी भी ब्रांड्स होती है, उसमें ये तो रहना ही है कि उनका ऑपरेशनल प्लान बहुत ही सेक्सी होगा, बहुत ही मजेदार होगा। सो मैकडॉनल्ड्स ऑपरेशनल प्लान emphasizes standardized process, efficient supply chain management, and employee training to maintain the consistency across the global financial franchise network। फिर आ जाता है management and organization, highlighting the management's team expertise, roles, and responsibilities instills the confidence in investors and stakeholders. Google's business plan, for instance, showcases the leadership of Larry Page and Sari Byrne, co-founders who brought innovative vision and technical expertise to drive the company's vision। तो ये अपना आ जाता है मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन। फिर अपना फाइनेंशियल प्लान, जो एज अ सीएस वी आर वेरी मच रिक्वायर्ड। सो फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस इंक्लूडिंग रेवेन्यू फोरकास्ट, expense estimates, cash flow projections, funding requirements are essential for investors to evaluate the business potential। तो स्टोरी जितनी भी अच्छी हो, धंधा तो नंबर से ही बनेगा ना। सो धंधा इक्वल्स टू नंबर, मैं ऐसा ऐसा बोलता हूँ सबको, सर धंधा इक्वल्स टू नंबर्स। नंबर्स बोलने चाहिए, बोला स्टोरी जितनी भी हो, नंबर्स होंगे तो कोई भी खरीद लेगा। So Instagram's business plan during its early stage projected advertising revenue growth based on user engagement, metrics and market trends, attracting the investment to fuel its expansion। तो Instagram ने कैसे ग्रोथ की कि भाई जो उसका एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू था, उसको ग्रो करके करके कस्टमर एक्वायर करना शुरू कर दिया। Examples given in textbooks can read if you want to। तो fin transaction revolutionizing the financial transaction, या फिर गेम जीनियस redefining the gaming education and skill development। तो उसके पूरे के पूरे एग्जांपल दिए कि उन लोगों ने कैसी पिच डेक बनाई थी। तो यू कैन रीड इट, अपने ने आगे जो एग्जांपल्स पढ़े थे उसके जैसे ही इसमें भी एग्जांपल्स है। फिर आ जाता है मेकिंग अ पिच डेक, कि पिच डेक कैसे बनानी है। सो टू क्रिएट अ कंपेलिंग पिच डेक, स्टार्ट विद अ क्लियर एंड कंसाइज आउटलाइन कवरिंग की एलिमेंट्स, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, मार्केट, प्रोडक्ट, बिजनेस मॉडल, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, टीम, फाइनेंशियल्स एंड आस्क कितनी है। तो ये सब स्लाइड्स होनी चाहिए। सो ईच स्लाइड शुड कन्वे वन की पॉइंट सपोर्टेड बाय विजुअल्स एंड मिनिमल टेक्स्ट। फोकस ऑन स्टोरी टेलिंग, हाईलाइटिंग योर यूनिक वैल्यू proposition and the market opportunity, practicing delivering your pitch with confidence and passion, iterate and refine based on the feedback. Remember, the goal is to capture the investor's attention, spark interest in your idea, and ultimately secure the funding to bring your vision to the life।
क्रिएटिंग एन इफेक्टिव पिच डेक रिक्वायर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स अक्रॉस वेरियस डोमेन्स। तो क्या-क्या हो जाता है, तो कौन-कौन सी डोमेन्स चाहिए, तो पहला तो कंटेंट डेवलपमेंट आ जाता है। सो एबिलिटी टू डिस्टिल कॉम्प्लेक्स आइडियाज इंटू अ क्लियर एंड कंपेलिंग मैसेजेस, हाइलाइटिंग द की एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस सच एज़ द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड, द सॉल्यूशन ऑफर्ड, मार्केट अपॉर्चुनिटी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई इट्स कॉल्ड एज़ कि सिंपल करना कोई भी चीज़ बहुत डिफिकल्ट है। सिंपल करना बहुत डिफिकल्ट है और कॉम्प्लेक्स करना कोई भी चीज़ बहुत ईज़ी है। कोई भी चीज़ को कॉम्प्लेक्स करना मतलब बहुत ही आसानी से हो जाती है, बट सिंपल करने में ना जान निकल जाती है। सो दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग कि भाई ये एटीट्यूड होना चाहिए कि भाई जो चीज़ों को सिंपल कर सके, भले वो डिफिकल्ट है बट वो आना चाहिए कि चीज़ों को अपने सिंपल कर सके। सो फर्स्ट इज़ कंटेंट डेवलपमेंट, फिर आ जाता है विजुअल डिज़ाइन कि अच्छा दिख रहा है कि नहीं। सो प्रोफिशिएंसी इन ग्राफिक डिजाइनिंग टूल्स टू क्रिएट विजुअली अपीलिंग स्लाइड्स दैट एनहांस द अंडरस्टैंडिंग एंड एंगेजमेंट। दिस इंक्लूड्स सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट फ़ॉन्ट्स, कलर्स, इमेजेस एंड लेआउट्स कन्वे इन्फॉर्मेशन। तो अब ये सब है ना पुरानी बातें हो, जो ये चैट चैट जीपीटी का क्लॉड और गामा आ गया, उसके बाद तो ये सब चीज़ें फट-फट हो जाती है। पहले टाइम लगता था इन सब चीज़ों में, बट अब तो निकाल सकते हो फटाफट, आप भी शांति से बना सकते हो अच्छी वाली। बट व्हाट आई बिलीव इज़ इनपुट्स डालना आपके हाथ में है। सो इनपुट्स फाउंडेशनल नॉलेज इज़ वेरी मच नेसेसरी ऑफ स्टोरी टेलिंग। के फाउंडेशनल नॉलेज क्या है स्टोरी टेलिंग का? तो वो एक बार अगर आप जान लो ना, फिर क्रिएटिंग स्लाइड्स इज़ नॉट डिफिकल्ट। स्लाइड्स तो बना लोगे। ये इम्पोर्टेंट है, फाउंडेशनल नॉलेज, फिर क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, उसमें क्या-क्या चीज़ें जानी है। तो फाउंडेशनल नॉलेज एक बार ले लिया ना अच्छा खासा, एंड स्टोरी टेलिंग कैसे करनी है, अच्छी अच्छी स्टोरी टेलिंग में क्या-क्या चीज़ें आती है। अगर वो ले लिया तो फिर स्लाइड्स तो बन जाएगी। देखो स्लाइड बनाना आज के ज़माने में दिक्कत नहीं है। आज के ज़माने में दिक्कत ये है कि फाउंडेशनल नॉलेज किसको है, स्टोरी टेलिंग किसको आती है। एंड दैट्स व्हाट डिफरेंशिएट्स अ गुड सीए एंड प्रीटी एवरेज सी है, कि उसको ये सब चीज़ें वी स्टडी से कॉस्टिंग है, सब पढ़ लेते हैं, एफआर, एएफएम, ये वो, बट ये जो स्टोरी टेलिंग का जो एस्पेक्ट है ना, वो हमें पढ़ा ही नहीं जा रहा है। एंड दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, एंड वो टाइम लेता है लर्न करने में, बिकॉज इट्स अ सॉफ्ट स्किल और वो टाइम लेगा। बट अगर आपको सीखना हो ना स्टोरी टेलिंग, तो थिंक स्कूल का जो वीडियो है ना, थिंक स्कूल का एक कोर्स है ₹2000 का, डू टेक इट। अगर कुछ भी ना समझ आ रहा हो ना, तो भी टेक इट, बट इट विल जस्ट चेंज योर लाइफ के यू विल जस्ट हैव अ वेरी डिफरेंट अप्रोच टुवर्ड्स द स्टोरी टेलिंग। और अगर दूसरी चीज़ में अगर बोलूँ तो थिंक स्कूल का नहीं करना है, तो अपना जो आईसीआई है ना, वो उसने भी ऐसा कुछ करवाया था, मास्टर क्लास ऑन लीडरशिप। आप मेरे लिंक्डइन पे जाओगे ना, तो आपको मिल जाएगा वो वाला सर्टिफिकेट। तो उसमें भी अ, वहाँ पे भी दे टीच आईएसबी से इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से दे गॉट द फैकल्टी, अपना आईसीआई का ही सर्टिफिकेशन था, एंड आई डिड इट, एंड इट वाज वन ऑफ अ कोर्स। मतलब आईसीआई ने कुछ अच्छा किया हो तो दिस वाज अ कोर्स दैट दे डिड, थोड़ा बहुत अच्छा अच्छा खासा चीज। तो डू डू सी दिस थिंग्स, मजा आएगी, यू विल लर्न समथिंग। लर्निंग से कभी भाग नहीं पाओगे, तो लर्न कर लो जितना कर सकते हो। फिर आ जाती है स्टोरी टेलिंग। तो मैंने वही बोला कि अपने को कुछ आता ही नहीं है। So skill in crafting a narrative that captivates the audience, builds intrigue and communicates the value proposition of the business in a memorable way. This involves structuring the pitch deck to flow logically from problem to the solution to market opportunity to traction and beyond। The storytelling आनी चाहिए। फिर आ जाता है data analysis, the ability to analyze market research, industry needs and financial projects to provide evidence-based support for the business case presented in the pitch deck। फिर आ जाता है communication, so strong verbal and written communication skills to effectively convey ideas, answer the question and address the concerns during the presentation। तो कम्युनिकेशन तो हर हर चीज में अच्छी चाहिए ही होती है, वो तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। फिर आ जाता है 9 क्वेश्चंस एवरी पिच डेक नीड्स टू आंसर। तो कौन कौन से सर, एज एन इन्वेस्टर रिव्यूइंग अ पिच डेक, यू वुड प्रायोरिटाइज क्लैरिटी, क्रेडिबिलिटी एंड अ कंपेलिंग वैल्यू प्रोपोजिशन। तो क्या क्या आप आपको क्या चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, क्रेडिबिलिटी कौन है ये बंदा, एंड कंपेलिंग वैल्यू प्रोपोजिशन चाहिए। So ये 3 चीज़ें चाहिए, को क्या-क्या है? क्लैरिटी, credibility and compelling storytelling. So you shall look for a clear problem solution fit supported by evidence of a sizable market opportunity and meaningful attraction. The team's expertise, track record and dedication should be a key considerations alongside a differentiated product or service and a sustainable business model. Financial projections should be realistic and the funding ask should align with the company's growth trajectory. Ultimately, you must evaluate the potential for a significant return on investment and the team's ability to execute their vision effectively. तो ये पूरी चीज यहाँ पे आ जाती है। सो इन्वेस्टर्स ऑफन स्ट्रगल विद द पिच डेक्स दैट लैक क्लैरिटी और फेल टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट द बिजनेस वैल्यू proposition. They may encounter pitch decks that are overly complex or dense with information, making it difficult to grasp the core message. Additionally, incomplete or inconsistent data such as vague market sizing or unsubstantiated claims can raise doubts about the credibility of the business. अब
अपॉर्चुनिटी। तो ये अपने ने जो बात की वही पूरी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। सो इन्वेस्टर्स आल्सो फेस द चैलेंज व्हेन द पिच डेक लैक अ कंपेलिंग नैरेटिव और फेल टू एड्रेस की क्वेश्चंस अबाउट द टीम्स कैपेबिलिटीज, competitive landscape of financial projections. Furthermore, investors may find it challenging to differentiate between hype and substance, particularly when presented with a flashy visuals or buzzwords that overshadow the underlying business fundamentals. तो ये fundamentals कभी चेंज नहीं होंगे। अगर fundamentals अच्छे है ना तो कंपनी अच्छी चलने वाली है, स्टार्टअप अच्छा चलने वाला है। तो that's the point of things. So overall, investors struggle with the pitch decks that do not effectively convey the business's potential or fail to instill the confidence in its viability and the growth prospects. To ensure that the idea and the business surrounding it is appealing to the investors, every entrepreneur must ensure this 9 questions to be answered. तो ये 9 questions आंसर होने चाहिए। So what are those 9 questions? So what is the problem being solved? How big is the problem in terms of current and future potential of solving it? How are you solving it? What is the business model? How would you make money from the solution? Marketing strategy क्या है? Team क्या है? And what are the current financial and what is the future realistic projections? And how much is asked for the investors? तो ये पूरी चीज यहाँ पे आ जाती है। तो some key funding terms commonly used in the startups and investment space, तो कौन कौन से key terms है? So let's see. तो पहला तो है TAM, total addressable market. So TAM represents the total market demand for a product or service measured in terms of revenue potential. If a company were to acquire 100% of the market, it helps investors assess the scalability and growth potential of a startup. तो ये पूरा का पूरा मार्केट है, तो ये पूरा अपना टैम हो गया। फिर आ जाता है सैम, सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट। सो सैम इज अ सबसेट ऑफ टैम representing the potential of market that a company can realistically target serve with its product or service. It helps investors gauge the market segment and segment a startup intends to focus on. तो ये अपना हो गया टैम, तो ये अपना हो गया सैम। तो सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट कितना है? फिर आ जाता है लॉन्ग टर्म वैल्यू कस्टमर, लॉन्ग टर्म कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, लाइफ टाइम वैल्यू है। एलटीवी इज लाइफ टाइम वैल्यू, सॉरी, लॉन्ग टर्म कस्टमर वैल्यू नहीं, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। सो एलटीवी इज अ प्रेडिक्टेड नेट प्रॉफिट एट्रिब्यूटेड टू द एंटायर फ्यूचर रिलेशनशिप विद द कस्टमर। इट हेल्प्स इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंड द लॉन्ग टर्म रेवेन्यू पोटेंशियल फॉर स्टार्टअप्स कस्टमर बेस, कि एक बार अगर कस्टमर आ गया तो वो पूरी जिंदगी में अपने ही प्रोडक्ट कितनी बार खरीदेगा और उसकी वैल्यू क्या क्या होगी। सो दैट्स द लॉन्ग टर्म वैल्यू। सो दैट्स अ कस्टमर लॉन्ग टर्म वैल्यू। एक बार कस्टमर अपने पास आ गया तो पूरी जिंदगी अपना प्रोडक्ट खरीदता रहेगा, खरीदता रहेगा। तो इस पूरे कैश फ्लोज की वैल्यू क्या है? तो दैट्स अवर लॉन्ग टर्म वैल्यू। फिर आता है कैक, कैक दैट इज कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। कैक इज द कॉस्ट एसोसिएटेड विद एक्वायरिंग अ न्यू कस्टमर इंक्लूडिंग मार्केटिंग, सेल्स एंड अदर एक्सपेंसेस, के कितने में नया बंदा आ रहा है, तो ये एक बंदे लाने में कितनी कॉस्ट लग रही है और दूसरा बंदा लाने में कितनी कॉस्ट लग रही है। दैट इज कैक, दैट इज कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। इट हेल्प्स इन्वेस्टर्स इवैल्यूएट द एफिशिएंसी ऑफ स्टार्टअप्स कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटजी। फिर आ जाता है रनवे, के रनवे कितना है? सो रनवे रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ टाइम अ स्टार्टअप कैन ऑपरेट बिफोर रनिंग आउट ऑफ फंड्स, टिपिकली एक्सप्रेस इन मंथ्स। तो रनवे के कितने फंड खत्म हो जाए उसके पहले कितना टाइम उसके पास बचा है। सो इट हेल्प्स इन्वेस्टर्स असेस स्टार्टअप्स फाइनेंशियल हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी। फिर आ जाता है बर्न रेट। बर्न रेट इज अ रेट एट विच अ स्टार्टअप इज स्पेंडिंग इट्स अवेलेबल फंड्स, यूजुअली एक्सप्रेसेस द मंथली और द एनुअल फिगर। इट हेल्प्स इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंड हाउ क्विकली अ स्टार्टअप इज कंज्यूमिंग इट्स कैपिटल एंड इवेल्युएट्स इट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो कितना बर्न कर रहा है, कितना पैसा फूक रहा है, वह वो चीज अपनी बर्न रेट आ जाती है। फिर आ जाता है चर्न रेट। एक बार कस्टमर आ गया तो वो कितना कितने बार रिटेन रहता है और चला कितने बार जाता है। सो churn rate is a percentage of customers who stop using a company's product or service over a certain period. It helps investors assess the customer retention and the quality of the startup offering. That is churn rate. Now, जनरल यूजेज ऑफ फंड्स फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, के इन्वेस्टर्स के पास से पैसा लेके कहाँ डालते हैं, कहाँ फूकते हैं। सो पहला तो चीज आ जाती है द यूज ऑफ फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक नीड्स एंड प्रायोरिटीज ऑफ द स्टार्टअप एज वेल एज द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। बाय स्ट्रेटेजिकली अलोकेटिंग फंड्स टू द स्टार्टअप की इनिशिएटिव्स, support key initiatives, startups can position themselves for success and drive the sustaining growth. Investors typically providing funding to startups to support various aspects of their growth and the development. Some common uses of funds from the investors इंक्लूड, तो ये चीजें हैं जो जहाँ पे पैसा फूकते हैं। तो पहला तो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फिर आ जाता है ऑपरेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्केलिंग, रिसर्च एंड मार्केट वैलिडेशन, मार्केट एक्सपांशन, टैलेंट एक्विजिशन एंड लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। तो यहीं पे तो इतने ही तो खर्चे होते हैं, दूसरे कौन से खर्चे होते हैं। सो यहीं पे ये लोग पैसे डालते हैं। फिर एक एक चीज को डिटेल में पढ़ते हैं। सो पहला तो आ जाता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सो फंडिंग में भी अलोकेटेड टुवर्ड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स टू एनहांस द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और डेवलप द न्यू वंस, के R&D करो और उससे प्रोडक्ट अच्छा हो गए। This could involve hiring engineers, designers, and other technical talent, as well as investing in the technology infrastructure and tools. तो ये अपना हो गया
प्रोडक्ट डेवलपमेंट। फिर आ जाता है मार्केट एक्सपेंशन। सो फंड्स में बी यूज्ड टू एक्सपांड द स्टार्टअप्स मार्केट रीच एंड कस्टमर बेस। दिस कुड इंक्लूड मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग द कैंपेन्स, सेल्स टीम एक्सपांशन एंड इन्वेस्टमेंट इन द कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटजी। तो ये अपना हो गया मार्केट एक्सपेंशन कैसे करेंगे। फिर आ जाता है ऑपरेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो फंडिंग में भी डायरेक्टेड टुवर्ड्स डे टू डे operation and building infrastructure to support the business growth. This could include expense related to the office space, utilities, equipment and administrative personnel. तो ये अपना हो गया ऑपरेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा फूक सकता है, पैसा डाल सकता है। फिर आ जाता है टैलेंट एक्विजिशन के लो व्हाट आई बिलीव दैट सबसे बड़ा असेट अगर कोई है ना, द हाईएस्ट आरओआई असेट इज द ह्यूमन रिसोर्स। कि ह्यूमन रिसोर्स से बड़ा असेट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ है ही नहीं कि मशीन बन जाएगी वो चला जाएगा, बट जो ह्यूमन रिसोर्स का ये जो खोपड़ी है ना, खोपड़ी अपना वो सबसे बड़ी चीज़ है। So startups may use funds to attract the top talent and build a strong team. This could involve offering competitive salaries, benefits, and equity incentives to attract and retain the skilled employees across the various functions. फिर आ जाता है स्केलिंग। So as startups experience the growth, they may require additional resources to scale their operations and meet the increasing demand. This could involve scaling the production capacity, expanding into the new markets or geographic regions, and optimizing the supply chain processes. तो ये अपना हो गया कि स्केल कैसे करेंगे, तो ये चीज़ हो गई स्केलिंग की। फिर अपना आ जाता है लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। स्टार्टअप्स में allocate funds towards the legal and regulatory compliance, including securing patents or trademarks, obtaining necessary licenses or permits, and ensuring compliance with the industry regulations. तो ये अपना हो गया लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस कैसे करेंगे। फिर आ जाता है रिसर्च एंड मार्केट वैलिडेशन में पैसे पैसे डालेंगे। सो फंड्स में भी यूज टू कंडक्ट मार्केट रिसर्च, वैलिडेट द पीएमएफ एंड गैदर द फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर्स। दिस कुड इन्वॉल्व कंडक्टिंग सर्वेस, फोकस ग्रुप्स एंड बीटा टेस्टिंग टू इटरेट एंड improve the product or the service offering. तो दैट्स रिसर्च एंड मार्केट वैलिडेशन। नाउ डिफरेंशिएटिंग बिटवीन हाइप एंड सब्सटेंस। तो इन्वेस्टर्स का व्यू क्या होता है जो हाइप एंड सब्सटेंस को कैसे डिफरेंशिएट करता है। सो इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप्स entails inherent risks with a notable percentage failing within the initial years of operation due to various factors such as market volatility, regulatory changes, and operational challenges. Particularly in early stage startups, uncertainties loom large, including unproven business models and limited revenue streams. तो वो तो होना ही है। Investors may experience losses if these companies fail to establish PMF or encounter the difficulties in scaling. So generally, startups investments lack liquidity, making it challenging for investors to exit their positions swiftly. Valuation challenges further compound the risk, as early stage startups may have inflated the valuations that are difficult to justify based on the traditional financial metrics। वैल्यूएशन तो चैलेंजेस है ही कि भाई वैल्यू कैसे करोगे, इसका तो कैश फ्लो भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, असम्पशन नहीं है, ठोकते जाओ, ठोक के उसकी वैल्यूएशन लाओ, तो ये तो वेग ही वैल्यूएशन है। तो डिस्पाइट दिस रिस्क, इन्वेस्टर्स आर ड्रॉन टू स्टार्टअप्स फॉर द पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न्स। जहाँ पे रिस्क हाई है वहां पे रिटर्न्स भी हाई होगा होगा एंड होगा। So mitigating these risks involves conducting thorough due diligence, diversifying the investment portfolios, and seeking the professional advice to navigate the volatile startup landscape effectively. Investors should look beyond the hype and focus on and should look beyond the hype and focus on the substance when evaluating the startup opportunities, seeking evidence-based insights, clear value proposition, realistic projections, transparent communication, and a track record of execution to make informed investment decisions. Now, differentiating between the hype and substance is crucial for the investors when evaluating the startup opportunities. Let's understand how to differentiate between the two. पहला तो आ जाता है एविडेंस और क्लेम्स के बीच में क्या क्या है। सो सब्सटेंस इज बैक्ड बाय टेंजिबल एविडेंस सच एज मार्केट रिसर्च, कस्टमर फीडबैक, ट्रैक्शन मैट्रिक्स, डेमोन्स्ट्रेटिंग द वायबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस। कि भाई एविडेंस तो होना चाहिए ना, सब्सटेंस तो होना चाहिए। हाइप ऑन द अदर हैंड रिलाइज प्राइमरली ऑन बोल्ड क्लेम्स। ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बज़वर्ड्स, मेरा टैम ये है, मेरा सैम वो है। तो buzzword, bold claims है, grand promises without the substantial evidence to support them. So this is evidence and claims. फिर आ जाता है clear value proposition. So substance presents a clear and compelling value proposition addressing a genius need or pain point in the market with a differentiation solution. So hype often exaggerates or oversells the value proposition, lacking specificity or clarity about how the product or service truly has value. तो clear value proposition होना चाहिए कि भाई हाँ मेरा बिजनेस ये कर रहा है, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। So that is the clear value proposition. फिर आ जाता है realistic projections होने चाहिए जो finance में डालता है। So substance provides realistic and data-driven financial projections based on thorough market analysis and business fundamentals. Hype tends to present overly optimistic projections or inflated growth estimates without a solid foundation or understanding of the market dynamics. तो ये अपना आ गया realistic projections कैसे बनाने हैं। फिर आ जाता है transparent communication. Substance communicates transparently about the business model, team capabilities, competitive landscape, and the potential risks or challenges. Now, hype may resort to vague or evasive communication, glossing over the critical details or downplaying the potential drawbacks. तो ये अपना हो गया transparent communication.
नाउ फिर आ जाता है ट्रैक रिकॉर्ड एंड एग्जीक्यूशन। सो सब्सटेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट, प्रूवन एक्सपर्टीज एंड अ डेमोंस्ट्रेटेड एबिलिटी टू एग्जीक्यूट अ बिजनेस प्लान। तो अपना ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, तो ये अच्छा खासा इट कम्स इन सब्सटेंस। फिर आ जाता है हाइप। तो हाइप ऑफन लैक सब्सटेंस व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन विद एम्बिशियस प्लान्स फेलिंग टू मटेरियलाइज इनटू द टेंजिबल रिजल्ट्स और द सस्टेनेबल ग्रोथ। तो ये कितना हो गया ट्रैक रिकॉर्ड एंड एग्जीक्यूशन। फिर आ जाता है पिच डेक के सैंपल क्या क्या है, तो सैंपल पिच डेक कैसे बनानी है। तो पहला तो आ जाता है कवर स्लाइड, उसमें लोगो या फिर नेम ऑफ अ कंपनी कर लो। फिर पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, ऐसा डाल दो। फिर आ जाता है डेट, ऑप्शनल है। इफ यू सेंड अ डेक विद एन ओल्ड डेट यू लुक आउटडेटेड, एज इज लुकिंग टेकिंग यू अ व्हाइल टू रेज अराउंड, दैट्स ऑल व्हाई दैट आई सजेस्ट नेवर यूजिंग अ डेट के डेट यूज नहीं करनी चाहिए, वैसा बोल रहा है। नाउ अदर पोटेंशियल एडिशंस, लोगोस ऑफ एक्सेलरेटर, अवार्ड्स, पब्लिकेशंस फीचरिंग कंपनी स्लोगन, नेम ऑफ प्रेजेंटर, तो ये चलता है कवर स्लाइड। फिर आ जाता है एलिवेटर पिच के क्रिएट अ ब्रीफ वन लाइनर दैट डिस्क्राइब व्हाट्स द सर्विस और प्रोडक्ट, व्हाट्स द कोर प्रॉब्लम, डिस्क्राइब पेन और नीड, व्हाट यू आर सेइंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड हो जाती है एलिवेटर पिच के, बिकॉज इससे ही यू विल गेट। नाउ थर्ड इज व्हाट्स योर बिग विजन, के कैसा करना है। ग्राफिकली शो ऑल ऑफ दिस पॉसिबल एंड यूज लेस वर्ड देन ऑन द स्लाइड, कि भाई इससे भी छोटा क्या कर रहे हो, क्या कैसे कर रहे हो एंड क्यों कर रहे हो। तो ये यहाँ पे आ जाती है एलिवेटर पिच। फिर आ जाती है मार्केट अपॉर्चुनिटीज और टेम क्या है। फिर टेम में अपना व्हाट्स योर रियल टारगेट, सब कैटेगरी ऑफ जीएम, टोटल सेल्स ऑफ मिड प्राइस, ठीक है। फिर आ जाता है टारगेट क्लाइंट क्या है, की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि कंज्यूमर है, एंटरप्राइज है, डेमोग्राफिक टारगेट है, टाइप्स ऑफ बिजनेस है, एग्जांपल्स ऑफ आइडियल इंडिविजुअल्स, करंट डिमांड्स एंड यूनिक नीड्स क्या है, डिस्क्राइब एनी इंपॉर्टेंट मार्केट इवोल्यूशंस एंड व्हाई वी आर नाउ एट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो ये आ जाती है मार्केट अपॉर्चुनिटी। फिर आ जाती है मार्केट की प्रॉब्लम। सो व्हाट्स द प्रॉब्लम और अनमेट नीड यू आर सॉल्विंग, क्लियरली शो द पेन एंड द प्रॉब्लम और कन्वे द स्ट्रॉन्ग नीड दैट इज करंटली अनफुलफिल्ड, सेड यू कैन क्रिएट डिमांड, यूजुअली ओनली मार्केट लीडर्स कैन। फिर आ जाता है करंट सॉल्यूशन। तो करंट प्रॉब्लम्स क्या है एंड और सिग्निफिकेंट इनएफिशिएंसीज क्या है अभी के प्रॉब्लम में। दैट इज बिगेस्ट कंपटीशन क्या है, दैट इज स्टेटस को, चेंजिंग कस्टमर्स बिहेवियर। इवन इफ ओल्ड सिस्टम्स आर इन्फीरियर दे एग्जिस्ट एवरीवेयर, सो यू डोंट सॉल्व योर क्लाइंट्स नंबर वन प्रॉब्लम, साइरस मसनर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्व योर क्लाइंट्स नंबर वन प्रॉब्लम। तो ये अभी मैंने एक वीडियो देखा था अबाउट मोनिश मोनिश पबरा ऐसा नाम है उनका। तो ही सेड कि जब वो अपनी इन्वेस्टमेंट रेस कर रहे तो उन्होंने 20 स्लाइड्स की पिच डेक बनाई थी। बट जो सामने इन्वेस्टर बैठा था उसने बोला कि जब वो 11th स्लाइड पे गया तो उसने बोला गो बैक टू द 10th स्लाइड। कि 10th स्लाइड पे ही एक्सप्लेन अगेन कि 10th स्लाइड में क्या है क्या नहीं है, और आगे बढ़ने लगा। बट फिर इन्वेस्टर ने फिर से बोला कि भाई गो टू 10th स्लाइड। एंड उनको पता चला कि भाई ये जो 10th स्लाइड है, 10th स्लाइड में जो प्रॉब्लम्स लिखी है वही सबसे इंपॉर्टेंट है, और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिसको यही प्रॉब्लम होगी। सो व्हाट डिड ही डू इज कि ये जो 10th स्लाइड है उसको ही उसने 20 स्लाइड बना दिया, उसको ही एक्सपांड कर करके 20 स्लाइड में कन्वर्ट कर दिया। सो दैट्स व्हाट द मार्केट प्रॉब्लम इज, द सॉल्व योर क्लाइंट्स नंबर वन प्रॉब्लम। तो ये जो बात अपने की वो। फिर आ जाता है योर सॉल्यूशन और डेमो। सो शो और टेल अप्रोक्सीमेटली 1 to 5 स्लाइड्स ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विस, के शो स्क्रीनशॉट्स ऑफ की पार्ट्स ऑफ द बिजनेस। इफ यू हैव टाइम इन योर मीटिंग शो अ लाइव डेमो बट नॉट व्हेन पिचिंग ऑन स्टेज, डोंट शो अ वीडियो, इट कैन फेल टू प्ले एंड टेक्स अवे फ्रॉम योर प्रीशियस टाइम। टेल अ स्टोरी ऑफ अ फ्यूचर क्लाइंट और एन एग्जांपल ऑफ अ करंट क्लाइंट। शो द कोर वैल्यू प्रोपोर्शन टू अ क्लाइंट, बेटर, फास्टर, चीपर और मोर इकोनॉमिकल जो सॉल्यूशन है वो बताओ। फिर आ जाता है टीम। टीम में कौन कौन है, कोर टीम में द फाउंडर्स एंड चीफ्स है। फोटोज डाल दो, फिर रेलेवेंट एक्सपीरियंस डाल दो, लीडरशिप का एक्सपीरियंस, एजुकेशन। Don't write sentences. Do 1 or 3 bullet points. We are the right team who can execute this business plan because ठीक है। फिर आ जाता है मार्केट फिट है कि नहीं। सो शो हाउ यू फिट इन द मार्केट लैंडस्केप। डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स क्या है, इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स क्या है अपने, हाउ मच कैपिटल रेज उन लोगों ने कितना किया है, कौन इन्वेस्टर्स है उनमें, उनका रेवेन्यू, उनका की स्टेट्स, व्हाई वोंट इनडायरेक्ट का बिकम डायरेक्ट विद द सी व्हाट यू आर डूइंग वर्क्स। एंड फिर आ जाता है योर बिगेस्ट कॉम्पिटिटर इज द स्टेटस को, व्हाई विल कस्टमर्स स्विच टू यू वर्सेस द इंक्रीमेंट, आर यू चेंजिंग कस्टमर्स बिहेवियर, टाइप ऑफ डायग्राम्स, मार्केट लैंडस्केप, फीचर लिस्ट। सो पिच व्हाई यू आर 10x बेटर नॉट जस्ट 3x बेटर। कि ये करना है कि भाई बहुत बड़ी लंबी स्टोरी बताओ कि भाई मैं क्यों 10 गुना बेहतर हूँ। सिर्फ ऐसा ही चुटकुला नहीं हूँ कि भाई मैं बहुत बड़ी रेस का घोड़ा हूँ, तो वो बताओ। फिर आ जाती है मार्केट लैंडस्केप के अपने कहाँ पे क्वालिटी और इकोनॉमी के बेसिस पे अपने कहाँ पे है, फिर एक्सपेंसिव, डिस्काउंटेड, क्वालिटी। तो पुट योर कंपनी इन द टॉप राइट कॉर्नर कि ये अपना बाकी कॉम्पिटिटर्स यहाँ यहाँ पे है, अपने यहाँ पे। सो वो है मार्केट लैंडस्केप। फिर ये और है कि भाई कौन-कौन से इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे लोग हैं यार अपने यहाँ पे क्यों एग्ज़िस्ट करते हैं। तो वो हो गया मार्केट लैंडस्केप। फिर फीचर लिस्ट कंपैरिज़न। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड हो जाती है कि अपनी कंपनी में कौन-कौन से फीचर्स है, ये फीचर्स है और दूसरे में कौन-कौन से नहीं है। So this often makes you look 2 or 3 times better, not 10x better, so maybe only have as an appendix slide। तो ये होनी चाहिए, और इससे बहुत खासा बहुत आइडिया आ जाता है कि भाई क्या कर रहा है स्टार्टअप एंड उसको क्या बनाना है।
फिर आ जाता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। करंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्या है, अनफेयर कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्या है, पेटेंट्स है कि नहीं, की रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप्स क्या है, बैरियर्स टू एंट्री क्या क्या है नए लोग के पास, मनी, टाइम, एक्सपर्टीज, रिलेशनशिप, पेटेंट्स एंड कॉम्पिटिटर्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और वीकनेस। तो ये अपना हो गया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की स्लाइड। फिर रेवेन्यू मॉडल के अपने पैसे कैसे बनाएंगे, सो हाउ डू यू मेक मनी, की रेवेन्यू स्ट्रीम्स, प्राइसिंग क्या है, फ्लैट फी है या फिर डिस्काउंट है, व्हाई दैट रेट्स, रिकरिंग रेवेन्यू क्या है, इज देयर अ बिग डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट रेवेन्यू, हाई वॉल्यूम लो वॉल्यूम बिजनेस है कि नहीं है। एग्जाम्पल शोकेसिंग बेसिक मैथ, 100 क्लाइंट्स इंटू ये पूरी चीजें बतानी होती है। फिर आ जाता है कैश कलेक्शन, इमीडिएटली 30 और 90 डेज है कि एक्सपेक्टेड कन्वर्जन रेट टू गेट अ पेड क्लाइंट, एक्सपेक्टेड ARPO, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है कितना है, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर। तो जितना जितना अपन ने अभी तक पढ़ा वो सब स्लाइड्स में कहीं ना कहीं आना चाहिए। फिर फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, तो ये अपने ने पूरी चीज अपन ने आपका CA का ईयर्स प्रोजेक्टेड, ईयर मिड स्टेट 1 और 2 3 to 5, तो ये सब चीजें फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस की आ जाती है। अपना पूरा फाइनेंशियल मॉडल यहाँ पे डाल दो। फिर आ जाता है कैपिटल रेस के आस्क कितनी है, हाउ मच कैपिटल आर यू लुकिंग टू रेस, स्टेज क्या है, साइज क्या है, सीड राउंड है 500K, सीरीज A 200 to 1 million। फिर इन्वेस्टमेंट टर्म्स, प्रेफर्ड इक्विटी, कन्वर्टेबल इनटू कॉमन, कन्वर्टेबल नोट ले रहे हो तो वो बता दो। इन्वेस्टर्स इन राउंड क्या है कि पहले कोई इन्वेस्टर था, कोई आ रहा है, फाउंडर्स क्या है, की एंजल स्ट्रेटेजिक्स क्या है, एवरेज मंथली एक्सपेंसेस क्या है, एंड यूज ऑफ प्रोसीड्स क्या होंगे, क्या सेल्स मार्केटिंग में, की एम्प्लॉयज में, फाउंडर सैलरी में, कहाँ पे जाना है, बिल्ड आउट फॉर द डेवलप टेक्नोलॉजी, फाइल पेटेंट्स, कहाँ कहाँ पे पैसे जाना है, अचीव अचीवमेंट ऑफ द की क्लाइंट्स। तो ये अपना हो गया ये अपना कैपिटल रेज़ एंड यूज़ ऑफ प्रोसीड्स वाली स्लाइड होगी। फिर आ जाता है क्लोजिंग स्लाइड कि आप अब आपका लोगो, लिंक टू स्लाइड, क्वेश्चंस कोई है तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल, आईफ़ोन। सो आफ्टर ऑल क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड बाय द इन्वेस्टर, आस्क व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस। रिमेंबर गोल ऑफ द मीटिंग इक्वल्स टू गेट द नेक्स्ट मीटिंग, कि ये वही है कि भाई मीटिंग कर तो ली बट उसका गोल यही होना चाहिए कि भाई नेक्स्ट मीटिंग में कब आ रहे हैं, नेक्स्ट मीटिंग में क्या डिस्कशंस हो सकते हैं। सो दैट्स द एंटायर गोल ऑफ द मीटिंग। जस्ट अ मिनट, मुझे वॉशरूम ब्रेक लेना पड़ेगा। चलो लेट्स स्टार्ट ऑफ द आर्ट ऑफ एलिवेटर पिच। तो आर्ट ऑफ एलिवेटर पिच क्या है? सो एन एलिवेटर पिच इज अ कंसाइज एंड compelling presentation that succinctly conveys the essence of a business idea, product, or service in the span of a short elevator ride, typically 30 seconds to 2 minutes. The term elevator pitch originates from the scenario of an entrepreneur unexpectedly encountering a potential investor or stakeholder in an elevator and having only a brief moment to pitch their idea before reaching the destination. The importance of an elevator pitch lies in its ability to effectively communicate the value proposition of a business in a clear, concise, and persuasive manner. It serves as a powerful tool for capturing the attention of potential investors, customers, partners, or collaboration in situations where time is limited and attention spans are short. Some examples to understand what an elevator pitch is. तो कर लेते हैं। अर्बन क्लब का क्या था? Now Urban Company. So Urban Club, now known as Urban Company, is India's leading home service platform connecting customers with trusted professionals for various household needs. Whether it's cleaning, repairs, beauty services, or home improvement, our app offers hassle-free booking and reliable service delivery. With Urban Company, you can enjoy the peace of mind and quality service at your doorstep. So ये भी बहुत बड़ा है। अगर मैं बात करूँ ना तो कैसे करनी चाहिए, तो देयर इज अ रूल ऑफ 7, 70 और 7। ये शायद मैंने पहले भी बताया था। दैट इज 7 सेकेंड्स, 70 सेकेंड्स और 7 मिनट्स। इतनी की पिच यू हैव टू गेट रेडी। 7 सेकेंड, 70 सेकेंड, 7 मिनट्स। तो ये पूरा आपके मगज में होना चाहिए कि 7 सेकेंड में मैं क्या बोलूंगा, 70 सेकेंड में अगर मुझे मिली तो क्या बोलूंगा, और 7 मिनट में अगर मुझे मिली तो मैं क्या क्या पूरा का पूरा पेल दूंगा। तो दिस इज व्हाट द एलिवेटर पेज शुड बी। तो एलिवेटर पेज कम्स इन हियर। तो ये 70 सेकेंड्स के लिए बेहतर है, बट व्हाट इज सजेस्ट कि ये 7 7 सेकेंड्स की भी एक पिच रेडी रहनी चाहिए सबके लिए। फिर आ जाता है पॉलिसी बाजार। सो पॉलिसी बाजार इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन इंश्योरेंस एग्रीगेटर, ऑफरिंग अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर कंपेयरिंग for comparing and purchasing insurance policies across the categories from health and life insurance to car and travel insurance. Our platform helps users find the best coverage at the most competitive prices. With Policy Bazaar, you can protect what matters most with the ease and the confidence. तो ये Policy Bazaar हो गया। फिर अपना आ जाता है क्रेडिट। क्रेडिट इज इंडियाज एक्सक्लूसिव कम्युनिटी फॉर क्रेडिट वर्दी इंडिविजुअल्स, रिवॉर्डिंग responsible credit behavior with exclusive rewards and benefits. With our app, members can manage their credit cards, track expenses, and earn rewards for the timely payments. From cashback offers to the premium experiences, Cred celebrates the financial responsibility and helps members unlock a world of perks. फिर आ जाता है मीशो। तो मीशो इज इंडियाज लार्जेस्ट सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म empowering individuals to start their own online businesses from home. With our app, resellers can discover trending products, share them with their network, and earn the commission on the sales.
Whether it's fashion, beauty, or lifestyle products, मीशो offers a lower risk and high reward opportunity for the aspiring entrepreneurs. तो ये अपना आ गया मीशो का पूरा लाइन। फिर आ जाता है जीरोधा। तो जीरोधा इज इंडियाज लीडिंग ऑनलाइन ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म, democratizing the access to the financial markets and empowering the investors to trade and invest with confidence. With our intuitive trading platforms and low cost brokerage fees, we are disrupting the traditional we are disrupting the traditional brokerage model and putting investors in control of their financial futures. From stocks to mutual funds, Zerodha offers a seamless investing experience for everyone. That is Zerodha. फिर आ जाता है एसेंशियल्स ऑफ एन एलिवेटर पिच। तो क्या आता है? तो एन एलिवेटर पिच जनरली हैज नो सेट फॉर्मेट एंड नो एंड कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बेस्ड ऑन द पर्सनालिटी। हाउएवर सम frameworks that help build a strong pitch can really come handy for the entrepreneurs। तो वो क्या है? 3 C's ऑफ द एलिवेटर पिच। तो वो क्या है? क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड कंपेलिंग। तो ये तीन होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए एंड कंपेलिंग होना चाहिए। फिर आ जाता है क्लैरिटी। तो क्लैरिटी क्या है? सो अ गुड एलिवेटर पिच कम्युनिकेट्स द वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफ द बिजनेस इन अ क्लियर and understandable manner. It avoids ambiguity and uses simple language to convey the problem being solved, the solution offered, and the unique benefits or advantages of the business. एकदम क्लैरिटी के साथ चीजें बताओ। फिर आ जाता है कॉन्फिडेंस। सो बीइंग कॉन्फिडेंट हेल्प्स grabs people attention and makes them interested in what pitching entrepreneur has to say. It also shows that the entrepreneurs themselves are really excited about the business ideas, and with confidence the pitch comes across as more convincing and memorable. तो ये अपना आ जाता है कॉन्फिडेंस की बात। थर्ड आ जाता है कंपेलिंग के एन एलिवेटर पिच शुड बी कंपेलिंग एंड एंगेजिंग, लिविंग अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन द लिसनर एंड prompting the further interest or the action. It highlights the most compelling aspects of the business such as market opportunity, traction, or differentiation, and evoke curiosity or excitement about the potential impact or the value of the ideas. Once the 3 C's are ready, the pitch further should cover the following aspects। तो क्या क्या होना चाहिए? तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होनी चाहिए, सॉल्यूशन, वैल्यू प्रोपोजिशन, ट्रैक्शन ऑफ प्रूफ और कॉल टू एक्शन। तो वहीं पे अपने जो पिच पिच डेक में जो जितना चीजें पड़ी उसका एक स्लो डाउन वर्जन, एक का लोअर डाउन वर्जन यहाँ पे आ जाता है। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? क्लियरली आर्टिकुलेट द प्रॉब्लम जो टारगेट कस्टमर्स आर फेसिंग। फिर थर्ड सेकंड आ जाता है प्रोवाइड द कॉन्टेक्स्ट एंड एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट द पेन पॉइंट्स, द एक्सपीरियंस। एंड थर्ड, एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट एड्रेसिंग द प्रॉब्लम एंड व्हाई इट्स सिग्निफिकेंट इनफ टू वारंट अटेंशन। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात हो गई। सेकंड आ जाता है सॉल्यूशन। So describe your solution in detail, focusing on how it directly addresses the identified problem. Second आ जाता है highlight the key features or components. फिर product or service that make it effective and unique, and last आ जाता है use simple language and avoid technical jargon to ensure the clarity। तो ये अपना आ गया solution। फिर थर्ड आ जाता है वैल्यू प्रोपोजिशन। तो क्लियरली कम्युनिकेट द वैल्यू योर सॉल्यूशन प्रोवाइड्स टू कस्टमर्स। क्या आपका कस्टमर आपको आपका जो प्रोडक्ट है वो वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर्स को। सो हाईलाइट द स्पेसिफिक बेनिफिट्स और आउटकम्स दे कैन एक्सपेक्ट टू अचीव बाय यूजिंग योर प्रोडक्ट और सर्विस। एम्फसाइज व्हाट सेट्स योर सॉल्यूशन अपार्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स एंड व्हाई इज द बेस्ट चॉइस फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम एट हैंड। तो ये अपना आ गया वैल्यू प्रोपोजिशन की बात। फिर आ जाता है ट्रैक्शन और प्रूफ जनरेट करना है। सो प्रोवाइड एविडेंस टू सपोर्ट योर क्लेम्स एंड डेमोन्स्ट्रेट द क्रेडिबिलिटी ऑफ योर बिजनेस। This could include customer testimonials, case studies, success stories, or data points showcasing the market validation or early adoption. Quantify your achievements where possible to add credibility to your pitch। तो ये ट्रैक्शन और प्रूफ की बात हो गई कि भाई क्या नंबर्स है, क्या जनरेट कर रहे हो नंबर्स में। तो वो चीज़ आ गई ट्रैक्शन और प्रूफ में। फिर आ जाता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या है? सो क्लोज योर पिच विद अ क्लियर एंड स्पेसिफिक कॉल टू एक्शन दैट prompts the listener to take the next step, whether it's scheduling a follow up meeting, requesting a demo or trial, or providing contact information for further inquiries। मेक इट इजी फॉर द लिसनर टू एंगेज विद यू फर्दर। कि भाई कॉल टू एक्शन अल्टीमेटली जो लास्ट स्लाइड में अपन ने पढ़ा कि कॉल टू एक्शन तो लेना ही पड़ेगा ना, कि नेक्स्ट मीटिंग क्या करनी है, या फिर डेमो दो तो, या फिर कुछ ना कुछ करो। सो बी कॉन्फिडेंट एंड असर्टिव इन योर कॉल टू एक्शन टू एनकरेज अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। फिर आ जाता है लर्निंग द आर्ट ऑफ द एलिवेटर पिच। सो क्राफ्टिंग द परफेक्ट एलिवेटर पिच इज नॉट जस्ट अ टास्क, इट्स एन आर्ट फॉर्म, अ मास्टरपीस वेटिंग टू बी पेंटेड विद वर्ड्स, your passion, and your vision। Imagine yourself as a storyteller, weaving a tale that captures hearts and minds in just a few short moments. With each word, you have the power to inspire, to engage, and to leave an undeniable mark on your audience. But it's not just about storytelling, it's about persuasion, the art of convincing others to believe in your dream, your mission, and your purpose. You must paint a picture so vivid, so compelling that they can't help but see themselves in it, embracing your vision as their own. Speak with confidence, with conviction, and with the unwavering belief in the power of your own message. And as you stand before your audience, remember the importance of delivery, the way you move, the way you speak, and the way you connect. Look them in the eye, stand tall, and let your passion shine through each and every word you utter. Practice until your pitch flows effortlessly, until it becomes a part of you, until it becomes a symphony of inspiration that resonates with all who hear it. But perhaps most importantly, remember the power of customization। Customization होना चाहिए।
ability to tailor your pitch and to the needs and desires of your audience. Research, listen, and understand what drives them, what moves them, and what inspires them. And then craft your pitch with care, with empathy, and with a genuine desire to make a difference in their lives. तो ये मेरी pitch थी. ऐसा pitch करना होता है, पता है? This is the art of elevator pitch. So now, further in elevator pitch, numbers play a crucial role in bolstering credibility, quantifying the achievements, and providing concrete evidence of the business potential. Incorporating the relevant numbers can significantly enhance the impact and persuasiveness of your pitch in several ways. It's not just about securing funding or making sales, it's about building relationships, fostering connection, and laying the foundation for the future collaboration and partnership. Whether it's networking events, investor meetings, or chance encounters in an elevator, having a polished elevator pitch ensures that an entrepreneur is always ready to seize the opportunities and make a lasting impression on those they meet. So, an entrepreneur must prepare a solid elevator pitch because it serves as a powerful tool for capturing attention, generating interest, and making a memorable impression on the potential investors, stakeholders, or the customers. In today's fast paced business environment, opportunities to engage with the key decision makers are often fleeting, and having a compelling elevator pitch can be the difference between the success and the missed opportunities. फिर आ जाता है रूल्स और स्टेप्स फॉर पिचिंग द आइडिया अगर आप इन्वेस्टर्स को पिच कर रहे हो तो क्या रूल्स है अगर कस्टमर्स को क्या कर रहे हो तो क्या है तो दोनों में थोड़ा सेम सेम ही है नो योर ऑडियंस फोकस ऑन प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन हाईलाइट मार्केट अपॉर्चुनिटी फ्रैक्शन वैलिडेशन बताओ डेमोन्स्ट्रेट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बिजनेस बिजनेस मॉडल क्या है लेट अस रिस्क हैव अ स्ट्रांग टीम बी कंसाइज एंड एंगेजिंग फॉलो अप एंड बिजनेस रिलेशनशिप तो ये वहीं पे इन्वेस्टर को कैसे पिच करना है फिर आ जाता है कस्टमर में नो योर ऑडियंस क्लियर कम्युनिकेटिव वैल्यू कंपेलिंग स्टोरी टेलिंग करो हाईलाइट द डिफरेंशिएशन क्या है अपना address the objection and concerns, provide social proof, testimonials क्या है, clear call to action, listen and adopt, follow up और nurture relationship करो and deliver an outstanding experience. तो ये हो गया इन्वेस्टर को कैसे पिच करेंगे कस्टमर को कैसे पिच करेंगे फिर आ जाता है हाउ टू पिच इफेक्टिवली open by saying your name, title, role, and company allows audience the quick hook, pitch your vision, not just what you currently are. Tell a story, reference the things people know or understand. Don't make people think or question you. Show real validators to prove your points. Supported by the strong emotional validators, the right opportunity clearly convey a big market, a plus big problem, plus the right solution. राइट टीम क्वालिटीज इंटीग्रिटी ये सब चीज़ें होनी चाहिए तो अब ये जो मैंने जैसे बोला ना हाउ टू पिच इफेक्टिवली तो ये थिंक स्कूल का जो कोर्स है ना वो ले लो एक बार के लिए एंड सी दैट जब क्लियर हो जाए या फिर नौकरी बैठे हो तो 2000 का कोर्स है बट 2000 का कोर्स आपको सिखा के बहुत जाएगा शायद कोई रील भी बनाओगे तो भी यही चीज़ आएगी यूट्यूब वीडियो बना रहे हो तो भी यही पे चीज़ आएगी कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो भी यहीं पे ये फाउंडेशनल नॉलेज काम आ जाएगा फिर आ जाता है आर्ट ऑफ परसुएशन The art of persuasion is a powerful skill that is indispensable for startups and entrepreneurs navigating the competitive landscape of business. Whether pitching to investors, selling products or service to customers, or rallying support from the stakeholders, the ability to effectively persuade others is essential for achieving the success and driving growth. Why persuasion is useful for startups and entrepreneurs? So first, it helps securing funding, it helps in attracting customers, it helps in building partnerships, and last, it helps in recruiting the talent. One of the top entrepreneurs from India who exemplifies the art of persuasion is Ratan Tata, the former chairman of Tata Sons, the holding company of the Tata Group, one of the India's largest conglomerates. Through his tenure, Ratan Tata demonstrated exceptional persuasive skills in various aspects of business, from securing investments to leading the strategic initiatives and fostering innovation. Ratan Tata was instrumental in persuading the investors and stakeholders to support the expansion and the diversification of the Tata Group. Under his leadership, Tata Sons successfully secured strategic investments and partnerships with global companies, including the landmark acquisition of Jaguar Land Rover from Ford Motor Company in 2008. Tata's persuasive negotiation skills and visionary leadership were pivotal in convincing stakeholders of the strategic value and potential of these partnerships. फिर आ जाता है he leveraged his persuasive influence to foster a culture of innovation within the organization, inspiring employees to think creatively, take risks, and pursue the disruptive opportunities. Tata's persuasive leadership style and commitment to innovation were evident in initiatives such as the Tata Nano, the world's cheapest car, which aimed to revolutionize the automotive industry by making car ownership accessible to millions of people in India. Ratan Tata used his platform and influence to advocate for social impact and corporate responsibility initiatives. He persuaded Tata Group companies to prioritize sustainability, ethical practices, and community engagement, aligning the business objectives with social and environmental goals. Tata's persuasive advocacy for corporate CSR and sustainable development helped position the Tata Group as a leader in the responsible business practices and earn him the widespread admiration and the respect. तो यही है टाटा की पूरी स्टोरी है
फिर आ जाता है his genuine empathy enabled him to build trust and forge a lasting relationship with stakeholders, including the employees, customers, investors, and government officials. His ability to connect authentically with people from diverse backgrounds and cultures contributed to the Tata Group's reputation for integrity, reliability, and ethical leadership. Tata's persuasive leadership style and commitment to building meaningful relationships have been instrumental in sustaining the Tata Group's legacy of success and resilience over the years. Learning from stalwarts like Ratan Tata, a lot of entrepreneurs have exemplified द आर्ट ऑफ परsuasion इन द वे दे एक्सपांडेड देयर बिजनेस। फिर आ जाता है तो उसमें लिशियस की बात आ जाती है। सो लिशियस इज अ बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप दैट ऑफर्स फ्रेश हाई क्वालिटी मीट एंड सी फूड प्रोडक्ट्स डिलीवर्ड टू द कस्टमर्स डोरस्टेप। The company has used persuasive storytelling through its marketing campaigns to highlight the quality and freshness of its product, emphasizing the farm to fork journey and the stringent quality standards employed in sourcing and the processing. By engaging customers with compelling narratives about the origin and journey of their food, Licious has successfully persuaded consumers to trust its brand and make the switch to the online meat ordering. तो लिशियस गुड ब्रांड जिसने मीट ऑर्डरिंग भले गुड ब्रांड तो नहीं बोल सकते मीट ऑर्डरिंग वाला है इसलिए बट धंधा अच्छा बना लिया नंबर्स के बेसिस पे दे हैव डन अ गुड सॉर्ट ऑफ थिंग्स। फिर आता है डंजो। सो डंजो इज अ हाइपर लोकल डिलीवरी स्टार्टअप बेस्ड इन बेंगलुरु दैट ऑफर्स एन ऑन डिमांड डिलीवरी सर्विसेज फॉर ग्रोसरीज मेडिसिन फूड एंड मोर। The company has employed persuasive pricing strategies such as offering competitive delivery fees and discounts for the first time users in attracting the customers and incentivize them to try its service. Additionally, Dunzo has leveraged persuasive communication through its app interface using clear and concise messaging to guide users through the ordering process and encourage the repeat usage. फिर आता है Topper is an edtech startup that provides personalized learning solutions for students preparing for exams. The company has used persuasive marketing techniques such as targeted advertising and social proof to attract the new users and drive the engagement. By showcasing the success stories and testimonials from the satisfied students who have achieved academic success with Topper's platform, the company has effectively persuaded parents and students to choose its service over the traditional tutoring methods. तो ये अपनी टॉपर की बात होगी। फिर क्रेड की बात होगी। So Cred is a fintech startup based in Bangalore that offers rewards and benefits for credit card users who pay their bills on time. The company has employed persuasive gamification techniques through its apps, such as offering exclusive rewards and incentives for achieving high credit card scores and maintaining good financial habits. By tapping into the users' desire for status and recognition, CRAD has successfully persuaded consumers to adopt responsible credit card behavior and become the loyal users of its platform. फिर आता है तिजोरी। So Tijori is an Indian e-commerce startup that specializes in selling handmade and artisanal products, including clothing, accessories, and home decor items. The company has used persuasive content marketing strategies such as storytelling and lifestyle branding to connect with consumers on an emotional level and evoke the desire for its product. Through visually appealing imagery, compelling product designs, and narratives that highlight the craftsmanship and cultural significance of its offering, Tijori has persuaded customers to make purchases based on the value and authenticity of its product. फिर आ जाता है CureFit. So CureFit is a health and fitness startup offering a range of services, including the fitness classes, healthy meals, and mental wellness programs. The company has employed persuasive marketing techniques such as social proof and scarcity to encourage signups and conversions. By showcasing the testimonials from satisfied customers and highlighting the limited time offers or exclusive discounts, CureFit persuades users to take action and commit to their health and wellness. फिर आता था वेकफिट। तो वेकफिट अभी बहुत चल रहा है जो मैट्रेस की ब्रांड है। So Wakefit is a D2C mattress brand that offers premium quality mattresses at affordable prices. The company has employed persuasive pricing strategies such as value-based pricing and price anchoring to position its product as high-quality alternatives to the traditional mattress brands. By offering transparent pricing and highlighting cost savings compared to the competitors, Wakefit pursues customers to choose its mattress over other options in the market. These examples demonstrate how Indian startups have effectively employed persuasive techniques in various aspects of the business, from marketing and pricing strategies to user experience, design, and content marketing. By understanding the psychology of persuasion and leveraging persuasion communication strategies, these startups have successfully influenced consumer behavior, built brand loyalty, and achieved growth and success in the competitive markets. तो ये वेकफिट की पूरी स्टोरी हो गई। फिर आ जाता है आर्ट ऑफ परsuasion, सोशल इम्पैक्ट इनिशिएटिव्स टू लर्न फ्रॉम। सोशल इम्पैक्ट का जो भी था। सो ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया आर यूजिंग द आर्ट ऑफ परsuasion टू ड्राइव द पॉजिटिव सोशल चेंज, मोबिलाइज द कम्युनिटीज एंड एड्रेस द प्रेजेंट pressing societal challenges. By leveraging the persuasive communication strategies, storytelling techniques, and grassroots advocacy efforts, these organizations are inspiring action, fostering empathy, and catalyzing meaningful change at the individual,
कम्युनिटी एंड सिस्टमैटिक लेवल। तो पहला तो आ गया स्वच्छ भारत मिशन, दैट इज क्लीन इंडिया कैंपेन, लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014। द स्वच्छ भारत मिशन इज अ नेशन वाइड क्लीनलीनेस कैंपेन, तो ये तो सबको पता है। द कैंपेन हैज एम्प्लॉयड परसुएसिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज टू मोबिलाइज सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटीज to participate in the cleanliness drives, adopt hygienic practices, and contribute to the mission's objective. Through persuasive messaging, public awareness campaigns, and community engagement initiatives, the Swachh Bharat mission has successfully inspired millions of Indians to take action towards creating a cleaner and healthier environment. तो ये अपना हो गया स्वच्छ भारत मिशन। फिर आ जाता है सी ट्रीज। सो सी ट्रीज इज अ बेंगलुरु बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन dedicated to the environmental conservation and the tree plantation initiatives. The organization has leveraged persuasive storytelling and grassroots advocacy to raise awareness about the importance of tree planting and biodiversity conservation. Through compelling narratives, educational workshops, and community outreach programs, CTRIS persuades individuals and communities to participate in the tree plantation drives, adopt sustainable practices, and become a stewards of the environment. By inspiring action and fostering a sense of ownership among the stakeholders, CTRIS has made significant contributions to the reforestation efforts and environmental sustainability in entire India. So that is CTRIS. फिर आ जाता है ब्रेक थ्रू इंडिया। सो ब्रेक थ्रू इंडिया इज अ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड द वायलेंस अगेंस्ट द वुमन एंड गर्ल्स इन इंडिया। द ऑर्गेनाइजेशन यूजेस persuasive advocacy and social mobilization strategies to challenge harmful gender norms, empower women and girls, and advocate for the policy reforms through multimedia campaigns, storytelling workshops, and community led initiatives. Breakthrough India pursues individuals, communities, and policymakers to recognize the importance of the gender equality, challenge the discriminatory practices, and take the collective action to create a more inclusive and equitable society. So, by catalyzing the social change and fostering the solidarity among the diverse stakeholders, Breakthrough India contributes to building a more just and the gender responsive India. That is Breakthrough India. तो समरी अगर देख ले, तो पूरा का पूरा समरी अगर देखे, so pitch decks and elevator pitches are essential tools for entrepreneurs seeking to communicate their business ideas, vision, and value proposition effectively to potential investors, partners, and customers. अब pitch deck क्या होती है? Visual representation that provides an overview of the business, including its market opportunity, product or service offering, business model, and financial projections. It serves as a concise and a compelling way to convey the key information and generate the interest in the business. Similarly, an elevator pitch is a brief, persuasive speech that succinctly communicates the essence of the business in the time it takes to ride an elevator. So, entrepreneurs can use pitch decks and elevator pitches effectively by crafting compelling narratives, focusing on the problem and solution, highlighting the unique advantages, and engaging their audience through storytelling and the persuasion. Confidence plays a crucial role in presenting a pitch deck as it helps entrepreneurs convey credibility, conviction, and enthusiasm for their business. To be confident, entrepreneurs should prepare thoroughly, practice the delivery, and believe in the value of their business proposition. By mastering the art of persuasion and cultivating the confidence, entrepreneurs can increase the chances of success in pitching their business ideas and securing support for their ventures. Now, agar MCQs देखें, so Kumar was looking for somebody who could help him understand the market research, industry trend, and financial projections to provide evidence based support for the business case presented in the pitch deck. Which skill is he looking for in the candidate? तो मार्केट रिसर्च का बात कर रहा है, इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड फाइनेंशियल प्रोजेक्शन की बात करें, तो डेटा एनालिसिस की बात हो रही है। फिर आता है ड्यूरिंग अ कस्टमर पिच एट अ लोकल फ्ली मार्केट, शर्मिष्ठा वाज आस्क्ड टू एक्सप्लेन हाउ हर बेबी केयर प्रोडक्ट रेंज विल एंश्योर हेल्थ कंसर्न्स ऑफ द सेंसिटिव बेबीज, which aspect of her pitch should she focus on to ensure them, highlight the difference in communicating the value proposition. The value proposition आना चाहिए इसमें, क्या वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होगा अपने प्रोडक्ट का। फिर आ जाता है व्हाट डज द रनवे मीन। तो रनवे कितना होता है कि भाई कितना चल सकता है, बिजनेस कितना चल सकता है। सो रनवे रिफर्स द अमाउंट ऑफ टाइम अ स्टार्टअप कैन ऑपरेट बिफोर रनिंग आउट ऑफ फंड्स। तो वही आ गया पहला, फर्स्ट फाउंडिंग, ठीक है। यही पहला ही ऑप्शन अपना राइट है। फिर आ जाता है मनीता वांटेड हर हस्बैंड आल्सो हर को-फाउंडर टू गेट प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन बीइंग अ ग्रेट स्टोरी टेलर। शी बीइंग अ स्ट्रांग बिलीवर ऑफ द पावर ऑफ persuasion wanted him to learn to encapsulate the listener's thoughts, but he was adamant that business numbers alone were enough to persuade an investor or a customer to buy the idea. Which of the following arguments could go against Manita while convincing her co-founder? Persuasion helps in building strong storyline. Persuasion might come across as a greed at times to customers and investors. Persuasion helps in building long-term partnerships. तो ये तो हो ही सकता है building strong storyline. Persuasion may pose threats while recruiting smart analytical talent. तो यही ये दो में से क्या हो सकता है? आई गेस डी होना चाहिए। मैं पोस्ट थ्रेड्स while recruiting the smart इन दोनों में से कुछ होना चाहिए। 2 मिनट देख लेते हैं अपने। पहले फिफ्थ वाला खत्म कर लेते हैं।
So jewelry and online jewelry brand manufacturing artificial jewelry at its workshop across the Rajasthan plan to streamline its production by bringing in high standardization in certain processes apart from designing and creatives, which you know across Rajasthan plan to streamline its production. Which aspect of the business plan would this decision form part of? तो ये अपना स्ट्रीमलाइन प्रोडक्शन है तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशनल प्लान, सॉरी ऑर्गेनाइजेशनल का ऑपरेशनल प्लान के ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं उसको दे विल डू इट आउट. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन स्लाइड इन अ पिच डेक. तो ये डिटेल फाइनेंशियल एनालिसिस थोड़ी होता है, शॉर्ट वाला होता है अपने वाला. तो ये हो गया. अब ये फोर्थ वाला एक बार सिर्फ टैली कर लेते हैं अपने. ओके, सो फोर्थ में बी ही है. सो मुझे यही लग रहा था कि ग्रीड वाला जो होता है ना, वही आता है. सो परसुएशन माइट कम अक्रॉस एज ग्रीड एट टाइम्स फॉर द कस्टमर्स एंड इन्वेस्टर्स. सो या, दैट्स इट. दैट्स चैप्टर 4 फॉर यू. एंड yeah, we will meet in the next chapter and complete the next chapter very significantly, very thoroughly. So yeah, that's me. See you, Prathama Gayala, signing off. Thank you. Bye bye.